University of Haripur, spread over an area of 236 canals, was once a rosin and turpentine factory established by the Forest Development Corporation, Government of Pakistan. The need of a higher educational institute in Haripur was taken in account, and a sub-campus was initiated at the factory, which was later given the status of an independent university. Office of Social Work was established in the university last year to educate our young generation with the aim to alleviate the conditions of the socially deprived part of our community. A mission statement was set forth, hand in hand, head with head, for the welfare of communities. 20 weeks of social work was set as a compulsory part of a bachelor's degree. Mr. Muhammad Tafal became the first in charge of the Office of Social Work, who worked to create an organizational structure to perform welfare activities in the Haripur district. मैं नाला बतू साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की सोशल वर्क कोऑर्डिनेटर हूँ। हम लोग गार्फन हाउस में बेसिकली काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे 2 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों ने उनकी नीड असेसमेंट करनी है और उसके बाद जो भी उनकी ज़रूरियात होंगी वो हम लिमिटेड बजट में पूरी करेंगे। उसके अलावा उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और उसके अलावा वहाँ पे क्लीनलीनेस करेंगे, ब्यूटिफिकेशन करेंगे और जिस हद तक हमसे रेनोवेशन हो सके वो करेंगे। Department of Management Sciences. I am the leader of BBA section A, B and C semester 5. हमने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 उसकी पहले 2 विजिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी हमने उनसे इनपुट में ली है और जो हमने खुद अपनी पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें उसमें से ऑब्जर्व की हैं 2 डेज़ में वो भी हमने किया, जिसमें लैब्स के कुछ इक्विपमेंट्स हैं, चार्ट्स वगैरह है साइंस के स्टूडेंट्स को। हमारा जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है जिसमें तमाम चीज़ें जो फर्स्ट एड के लिए इनिशियल तौर पर यूज़ होती हैं उसमें अवेलेबल हैं, लाइक बैंडेजेस, मेडिसिन, ईच एंड एवरीथिंग। ये हम जाके डेमोस्ट्रेट करते हैं बच्चों को, कोई भी चीज़ जो उस टाइम यूज़ होती है वो सारी चीज़ें। तो आँख, अगर आपके आँख में कुछ चीज़ डल गई है या आपकी आँख जल गई है या आपका गला गर्दन टूट गई है, आपका बाजू टूट गया है, इसमें हमने सारी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि हम लोग बच्चों को सिखा सकें कि उन्हें हम लोगों ने किस तरह ट्रेन करना है। और वो ये अच्छा, ये मतलब ये सारी बैंडेजेस और सारी बीपी ऑपरेट्स और ये जो हड्डी टूटने की और ये सारी मेडिसिन फर्स्ट एड की मेडिसिन है, जलने की भी हैं, पट्टियाँ भी हमने रखी हुई हैं और बाकी रुई शुई रखी हुई है अगर आपकी ब्लीडिंग होती है, ये सारा बांधने के लिए हमने सब रखा हुआ है। इवन कि हमने ये भी रखा हुआ है कि अगर आपका कोई चीज़ दब आ जाए तो आइस से आप जो ठंडा करते हैं तो वो करते हैं जो बहुत पैर हो I was the group leader for IT department for the social work activity. We have total visited of 7 colleges in the district Haripur for the creation of the websites. My team, which includes the students of BCS 7 semesters, helped the officials of the colleges to develop their fully functions first website. It was a great experience, especially for the students. Students interact with different officials of different colleges and help them to develop their first website. ये जो एक्टिविटीज़ हुई है सोशल वर्क की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस की तरफ से, इससे जो कम्युनिटी और फैकल्टी के ये स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप था वो ख़त्म हो गया है। ये ट्रू मीन्स में जो रिसर्च है वो ट्रांसफ़र हुआ है कम्युनिटी में और यही हमारा मकसद होना चाहिए कि हम जो रिसर्च करते हैं वो हम अपनी कम्युनिटी में उसको ट्रांसफ़र करें। तो ओवरऑल इसमें रिस्पेक्ट का एक रिलेशन कायम हुआ है कम्युनिटी में और स्टूडेंट्स में, और बाकी स्टूडेंट्स को भी हार्डशिप का पता चला है कि कम्युनिटी क्या क्या फेस कर रही है regarding to the new techniques of farming, or overall it was a very good experience. So social work, we have got amazing experience in the field from the stage of conceptualizing
then idealization, then practical implementation. More than 1,000 students has been in the field and doing work in the various sectors of like agriculture sector, like education, health, like the municipal administration, like hospitals and forestry, environmental regulation, etc. So they've got amazing experience while interacting with the community in the open field, various sections of the society. So this was an amazing experience, and students have got a lot of knowledge, practical knowledge in the field. So we are better planning for the better projects in the future, inshallah. Universities essentially are about, of course, about research and about teaching, but they cannot remain the ivory towers that we have established all across the country. They are perceived to be the ivory towers because there is a disconnect between the community where they are located, the stakeholders, and the institutions themselves. So the social work program is geared towards social integration. Outreach programs have been initiated, and these outreach programs are owned by the community because we support the community. Unless and until we have support of the community around us, there will be little ownership except the faculty, staff and students, but we need the support of the community also, and we need to provide and interact with the community so that there is a greater cohesion and achieving of the objectives in our mission and vision statement. So the social work program in all its facets, for example, students are the most important link between the community and now with 3,500 plus students, we have now students who can go and teach in government schools. They can go to hospitals, work there as interns. They can go for tree plantations. Unless and until they do this themselves and are seen by the community, there will be no ownership. So the community needs to own it by what extra over and above the teaching and research part that we have is that they do. So we have an excellent social work program designed for students since last year, and we want this to expand further. A few days back, the Chairman Higher Education Commission, when he was here, while I was making a presentation, he appreciated the effort of University of Haripur. Of course, it is a joint project between the Higher Education Commission and the University of Haripur, but I think it is a dedicated program which brings the community in a way closer to the university and provides an insight into what the university is about. Even a very small act, if performed on a large scale, can bring tremendous change. Our aim is to uplift all who are around us, as we are restoring hope and building communities.